So today we have to discuss topical past paper questions of bonding and structure. Yes. ठीक है. And सब topics include जो इस पूरे major topic को cover कर रहे हैं, that is atomic structure, ionic and covalent bonding, metallic bonding, element compounds and mixtures as well. Okay. So ये सारे topics के questions जो हैं फिर वो randomly जब पास पेपर में आते हैं तो ये मिक्स होकर आते हैं. अच्छा, इंक्लूडिंग डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स एज वेल. ओके, सो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं. सो इन द फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, draw a diagram based on correct formula of calcium nitride which shows the charges on the ions and the arrangement of electrons around a negative ion. अच्छा, first of all, that's we're talking about the calcium nitride, Ca3N2. अब ये जो कैल्शियम मेटल है, नाइट्रोजन हमारे पास एक नॉन मेटल है, तो मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होके क्या बनाते हैं? Co-ionic bond. आयोनिक बॉन्ड, राइट. सो आयोनिक बॉन्डिंग के लिए अब देखो उसने मेंशन एक और चीज यहाँ पे की हुई है, यूज डॉट टू रिप्रेजेंट कैल्शियम एंड क्रॉस टू रिप्रेजेंट नाइट्रोजन. ठीक है, तो इसके भी नंबर बनना आपके डिटेक्ट होंगे. सो कैल्शियम is a metal. Okay, so if we try to draw calcium, so calcium अपने लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, दो इलेक्ट्रॉन्स को, and carries 2 plus charge. Okay, carries 2 plus charge and Ca3, so that means you have to mark 3 over here. And what about nitrogen? Nitrogen in the form of nitrite. Exactly. So we will use cross 1, 2, 3, 4, 5. And 1, 2, 3. Dots for calcium. Nitrogen carrying -3 charge. 2 nitrogen. Okay. So this is exactly your arrangement. Now, in the lattice of calcium nitride, lattice mean it is an ionic structure. So what is exactly the lattice mean? Lattice mean a particular structure, organized structure, in which atom component is repeated gradually. Okay. So we have to write the definition of lattice over here. I repeat it. And organized structure of particles with perfect geometry. Okay. Yes. Now, in terms of ionic charges, explain why the ratio of ion is 3:2. So that's very simple. As we know that calcium carrying 2 plus charge and nitrogen carrying -3 charge.
So we know well one thing, ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो फार्मूला हमारा क्या बनता है, CA3 CO3 N2, N2. right? So Yes. यहाँ पे हमारे पास बात किस चीज की हो रही है, रेशो हमारा 3:1 रेशो, आइंस का क्यों आ रहा है, बिकॉज ionic charges balance and number of positive charge will be equal to the negative charge, right? So Yes. in the C part, the reaction between calcium and nitrogen to form calcium nitride is redox. अच्छा, redox reactions क्या होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन दोनों हो रहे होते हैं. In terms of electron transfer, why calcium is a reducing agent? So as calcium is a metal and a metal is electron loser. Okay, Yes. a metal gains positive charge, that is what, cation, Yes. by losing electrons. So calcium is a reducing Agent. and please remember this term, reducing agent. Oh. Calcium is the reducing agent. Even every metal is a reducing agent because every metal may lose their electrons. Okay. यहाँ पे हम एक और चीज भी लिख सकते हैं, because but all of that we have done it, the losing electrons. Enough. So question number 2. Ammonia is manufactured by a Haber's process. This is a process through which ammonia is manufactured, right? And literally, this question is a kind of a same that we have done yesterday, exothermic and endothermic. So the forward reaction of exothermic, what does it mean? Exothermic, what does it mean? External release of energy. Yes, a reaction in which energy is lost, लिख सकते हैं, release की जगह. To the surrounding. Yeah. So this is the meaning of exothermic, right? So state one use of ammonia. Ammonia is used As fertilizers. very good, making
Fertilizers, nitrogenous fertilizers, right? Yes. And uh, urea, nylon as well. What do you mean by this symbol? Double arrow mean? Remember this one? Double colon. No, no. This is reversible reaction. Okay. This is our next topic. Once we will do your rate of the reaction. So, what are the sources of nitrogen and hydrogen? Where we, how can we collect nitrogen? Mm, Nitrogen is usually collected from air. yes. And what about hydrogen? Hydrogen is usually collected from uh, hydrocarbon. Like methane. Do you know what is methane? Yes. CH. And what is catalyst, Aisha? Catalyst. Catalyst. Biocatalyst. Yeah, actually, the definition of catalyst is what? It is a reaction and it does not change itself. Yeah, a Matlab, substance which alter chemical change. reaction rate. Okay, and it does not consume itself. So usually in Haber's process, we use a catalyst, iron, Fe, or iron oxide. Okay. Mm. Now this is about the rate questions. You know, well, one thing, once we increase the temperature, so definitely reaction would be faster according to the kinetic particle theory or collision theory. Once we increase the temperature, the collision between the particles is faster. Yes. So the rate of reaction will also be faster and completed quickly. Yes. So how can we write as? Since rate of reaction increases, Is so more effective collision. will Okay, effective collision mean जिसके थ्रू हमारा रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा. ठीक है. So more effective collision occur. occurs, yeah, takes place, and faster the reaction. Now, if the temperature is higher than 450, so what would happen to the yield of ammonia? Actually, remember one thing. This is exothermic reaction. Exothermic means there is heat energy, loss of energy, and it should be taken as negative. And remember one thing, if we are actually losing energy, so should we conserve energy or further increase in temperature? Further. Why further increase? Because in the exothermic reaction, do you remember the energy profile?
It is already Yes. their reactants are already on very higher in High content, profile. higher profile. So if anything, any substance is already in higher profile, so why would we provide more heat? If we provide more heat, so definitely जो पहले जो हम heat दे रहे थे, इसको ऐसे समझ लो, एक चीज पहले से गर्म है, वो एक चीज हम्म, पहले से गर्म है, अब उसको अगर मजीद हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? वो अपने टेम्परेचर पे मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंचे वापस नॉर्मल पे आ जाएगा। हाँ, तो हमारा फायदा नहीं है ना एनर्जी देने का इतनी सारी। हम्म जब इतनी सारी एनर्जी हम देंगे नहीं तो डेफिनेटली वहां पे हमारा लॉस हो जाएगा एनर्जी का। हम्म ठीक है, सो if we increase the temperature, so definitely this is not beneficial for us. हम्म So what will happen? if we will increase the temperature so it will reach to its maximum point and then the normal temperature. Yield of ammonia. So do you know what the formula of ammonia? Yes. What is it? NH4. NH3. NH4 is ammonium. Ammonium, sorry, yes. Yield of ammonia is decreased because reactants are already on high energy profile, because the reaction is exothermic. ठीक है, नाउ अभी एक मैं एडिशनल चीज ये बता रहा हूँ कि अगर हम प्रेशर को हाई रखते हैं, सो पार्टिकल का जो इफेक्टिव कोलिजन है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में भी। सो व्हेनेवर pressure is increased, so effective collision will increase, effective collision will increase, so directly effect on rate and reaction becomes slow or fast. Fast. And अगर रिएक्शन हमारा फास्ट होगा तो उसकी yield क्या हो जाएगी? इंक्रीज और डिक्रीज? Decrease. डिक्रीज। व्हाई? इफ रिएक्शन इज फास्टर सो yield इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होने से? Increase होगी। ये याद रखो जरा, ठीक है? या आगे इस तरह के क्वेश्चन अभी आने आएंगे, अब जो टॉपिक हम कर रहे हैं ना, ठीक है? फॉर्चुनेटली क्वेश्चन इसके अंदर आ गया, चलो डिस्कस भी होगी एक चीज। सो yield of ammonia is increased because if pressure is increased, so the effective collisions also increase. yes, then effective collision will also be increased, right? Yes. Explain why the rate of reaction would be faster if the pressure was greater than 200 atmosphere. मीन के अगर हम यहाँ पे और ज्यादा प्रेशर को क्या कर दें, बढ़ा दें, Increase. so same criteria, same criteria along with that, more particles per unit area,
Okay. Mm. So more effective Collisions will take place. collision will take. अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन ना नंबर गेनिंग होते हैं, एक ही तरह का आंसर चल रहा था सब में. Suggest one reason why pressure higher than 200 atmosphere is not used in the Haber's process. अच्छा, अब ये मैं एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं. हम इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ा तो सकते हैं, फायदा होगा, लेकिन हम नहीं करते. रीजन क्या होती है? सबसे बड़ी रीजन क्या है इसकी? सेफ्टी कॉस्ट. अननेसेसरी है. जब आपका एक काम आपका हो रहा है तो जरूरत नहीं है मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर बढ़ाने की. ठीक है, जब आपका एक काम सुकून से विदाउट एनी प्रॉब्लम हो रहा है. दूसरी चीज, जब हम ये प्रोसेस कर रहे होते हैं तो अगर लेट सपोज कर लो कि 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे आपका काम हो जाएगा. ठीक है, सो वुड वी नीड टू इंक्रीज अप टू 200? No. तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी. ठीक है, इफेक्टिव कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी हमारे पास जो प्रोडक्ट की है. सो क्या लिख सकते हैं? क्यों नहीं करते भाई? Because of safety सेफ्टी and cost. Due ड्यू टू सेफ्टी इश्यूज and and cost of the product will be higher. अच्छा जी, डॉट एंड क्रॉस मॉडल ऑफ अमोनिया. आई थिंक यू कैन ड्रॉ दिस. yes. This is a nitrogen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Right? Yes. This is ammonia. Okay. Acid and bases. What is a base? एसिड एंड बेसिस का टॉपिक भी आपने किया हुआ है ना? रिमेम्बर? स्कूल में नहीं किया. मैंने नहीं कराया. आपने करा. टेबल याद है? So, what is a base exactly? A compound which gives us OH negative ions, or you can say a compound which accepts protons. Proton मतलब H plus. Okay. So there is an equation of ammonia and sulfuric acid, chemical equation. This kind of question is called mixed plate question. देखो काफी सारी चीजें पूछा है छोटी छोटी, पहले वाली भी आगे की भी. Ammonia formula is NH3 and sulfuric acid is H2SO4. H2S4. So product will be NH4 twice SO4. Ammonium sulfate. Balance one. Okay. So this is for the 2 marks. Now, explain. ये क्वेश्चन हमने पास पेपर में किया भी था उसे, if you remember. So, two macromolecular forms of carbon and are graphite and diamond. The structure of graphite and diamond are given below. Explain in terms of the structure why graphite is soft and a good conductor of electricity. So, what should be our reason? It is soft because
The ions are sliding over each other. Or weak forces? Weak intermolecular forces of attraction. Weak forces between layers. Okay. And layers can slide. Which can slide on. Oh, sorry, Each other. not on. Slide over each other. Over each other. Over each other. And why it is a good conductor of electricity? Because it has free moving. It is a good conductor as well because it has one free electron. Okay, it has one free electron. And you can also write mobile electron. Electrons. So state two uses of graphite. Lubricant. Lubricant, good. Lubricant. पेंसिल भी लिख सकते हैं. Pencil. The lead of the pencil. पेंसिल्स में यूज होता है. कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो कहाँ यूज होगा ये? एस electrodes. Okay. Or brushes. Okay. Silicon oxide has the same kind of structure. ठीक है, डायमंड की तरह का होता है, if you remember. Yeah. So मैक्रोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करेंगे हम? Every silicon atom is bonded. Okay, bonded With to 4 carbon. 4, not 4. Oxygen atoms. Macromolecular structure. SiO2 it is. This giant SiO2. molecule. Yeah. With oxygen atoms. Sand. Two physical properties which is common. Number one, high It has high melting point. और दूसरा insoluble in water, hard, shiny, और you may write non-conductor. Okay, so these are kind of questions. Confusion? Clear हुआ concept? Yes. Good. So these are a kind of important questions. अब देखो इसके अंदर questions जो आए हैं उसमें फिर हमारे पास पूरा क्वेश्चन बीच में पार्ट आ गया किसका? इक्विलिब्रियम वाला पार्ट, ये वाला सारा. तो सवाल बीच बीच में आते हैं इस तरह, ठीक है. सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सॉल्व फर्दर क्वेश्चंस ऑफ द सेम टॉपिक. इसका एक और सेशन हम रखेंगे और हर टॉपिक के हम कोशिश करेंगे डिफरेंट सेशंस रखें. जैसे एक सेशन हमने पहले रखा था एसिड एंड बेसिस का भी, उसका भी फिर इंशाल्लाह नया सेशन जो है वो रखेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक इंशाल्लाह सेशंस को हम करेंगे. तो आप लोगों ने इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की या पास्ट पेपर से देख के.
ठीक है। सो बाकी के टॉपिक्स हैं, उनकी जो वीडियोस आ रही हैं उनको भी लाजमी देखें, और कोशिश करें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने की, देन इंशाल्लाह यू विल एक्सेल एज ए स्टार ग्रेड। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बाकी सबको भी बताइएगा। सबका जारी हो जाएगा भाई, तुम्हें भी सवाल मिलेगा। ठीक है, सो टेक केयर। दिस इज डॉक्टर निजम साइनिंग आउट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।